नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है गाइस आपके अपने ही चैनल की एफसीएस और स्पोर्ट्स बेट पर गाइस आज बात करेंगे डब्ल्यूपीएल की बात करेंगे टेस्ट मैच की। पहले शुरुआत हम टेस्ट मैच से ही करते हैं। तो टेस्ट मैच और किस तरह का टेस्ट मैच घटा है इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। बात कर लेते हैं कि किस तरह की कप्तानी रही भारतीय टीम की ओर से, स्पेशली मतलब जिस तरह की कप्तानी की उम्मीद करते हैं उससे विपरीत रही। अगर आप कहें तो कप्तानी थोड़ी-सी अच्छी नहीं हुई, थोड़ी और बेटर हो सकती थी और डेब्यू भी बहुत शानदार रहा। तो बहुत सारी बातें करने को तो शुरू करते हैं और आज इंग्लैंड ने टॉस जीता, टॉस जीत के बल्लेबाजी का फैसला करते हैं। आकाशदीप बहुत ही ज़बरदस्त डेब्यू, अगर आकाशदीप की मैं बात करूँ तो क्या ज़बरदस्त डेब्यू की उन्होंने, मज़ा आया और वो ज़बरदस्त गेंद देखने को मिली। शानदार क्लीन बोल्ड करते हैं जैक क्रॉली को, लेकिन नो बॉल हो जाती है, फिर वो हताशा उनके चेहरे पे होती है, लेकिन उनका एक ऐसा ओवर आता है जिसमें आप बेन डकेट को सस्ते में आउट कर देते हैं। फिर ओली पॉप का विकेट आ जाता है, वो दूसरी गेंद पे 0 पे आउट हो जाते हैं। तो बड़ा मिला-जुला रहता है। आकाशदीप ऐसा लग रहा है जैसे डोमिनेट करेंगे पूरा दिन, इस तरह की गेंदबाज़ी होती है। फिर उसके बाद जैक क्रॉली का विकेट भी चटका देते हैं आकाशदीप, और आकाशदीप 3 विकेट ले लेते हैं और पहले सेशन में ही 2 विकेट और आ जाती है। आर अश्विन आते हैं जो जॉनी बेयरस्टो को आउट कर देते हैं। जॉनी बेयरस्टो जो कि थोड़ा-सा आप कह सकते हैं बेसबॉल अप्रोच को आगे कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे थे। 35 गेंदों में 68 रन बनाए ज़रूर, लेकिन बेयरस्टो फिर एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं और साथ में खड़े थे जो रूट और बेन स्टोक्स। तो पहले सीज़न सेशन की आखिरी गेंद पर बेन स्टोक्स का विकेट आ जाता है, रवींद्र जडेजा विकेट ले लेते हैं, गेंद नीचे रह जाती है और भारत जो है टॉप पे होता है, बिल्कुल टॉप पर 112 पर 5 ऐसा स्कोर होता है 112 पर 5। और जब फर्स्ट सेशन खत्म होता है तो कोई भी अगर मैच देख रहा होगा, किसी ने मैच को फॉलो किया होगा तो हर किसी को लग रहा होगा इंग्लैंड कितना बना सकती है, 150 पे ऑल आउट हो सकती है, हद से ज़्यादा, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? लेकिन ऐसा नहीं होता गाइस। तो अब थोड़ा-सा बात करते हैं आगे, मेरे साथ है कृष्णा, इनके साथ हेलो कृष्णा, कैसे हैं आप? मस्तु कुणाल भाई। मुझे मालूम है आपका जरा दिल दुखा है जरा आज बीपीएल के कारण। मैं एक्चुअली अभी टॉपिक वो बाद में हम बात करेंगे, पहले बात इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की, क्योंकि इंडिया पहले आता है, उसके बाद डब्ल्यूपीएल, आईपीएल आता है। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो जिस तरह का फर्स्ट सेशन रहा कृष्णा, डिसअपॉइंटमेंट तो होगी। ऑफ कोर्स 112 पे 5 हो आप फर्स्ट सेशन में और एट द एंड आप इंग्लैंड को आउट ना कर पाओ। जी बिल्कुल सेम। सच में भी ऐसे ही हुआ था। इंग्लैंड टॉप पर था, 3 विकेट पहली सेशन में थी। उसके बाद रोहित और जडेजा ने बड़ी लंबी पारी खेली। सेम आज इंग्लैंड 5 विकेट पहले खोए। और मुझे लगा नहीं इंग्लैंड 200 भी कर पाएगा जिस तरह से लोग स्थिति में थे। 112 पर 5 तो मुझे लगा ना इंग्लैंड 200 भी कर पाएगा, 250 भी कर पाएगा, लेकिन अभी वो लोग ये स्थिति पे है कि वो लोग 350 भी कर सकते हैं क्योंकि उनके पास सेटल रूट और रॉबिन्सन भी है। तो 350 तो मिनिमम कर ही सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगा नहीं था कि इंग्लैंड 200 भी करेगा, लेकिन रूट ने आज मतलब बहुत ही सेंसिबल इनिंग और उसने बेन फोक्स ने आज उनको अच्छा सपोर्ट भी दिया। अ, और एक सेशन पूरा बैट आउट कर दिया जैसा इंडिया ने भी किया था। थर्ड टेस्ट में एक सेशन पूरा बैट आउट किया था विदाउट लूजिंग विकेट। तो इंग्लैंड ने भी आज वैसे ही किया, एक सेशन विदाउट बैट आउट लूजिंग विकेट। सेम इंग्लैंड ने कॉपी किया वैसे ही, लेकिन फर्क है कि विकेट फर्क है। उसमें 5 विकेट खोए थे इंडिया ने और इसमें इंग्लैंड के 7 हुए, वही बस फर्क है। लेकिन इंग्लैंड के लेकिन ज्यादा कृष्णा विकेट अगर खोए हम थे पहले डिटेल में सेशन में, लेकिन क्या क्या कृष्णा अगर मैं देखो डिटेल में अगर थोड़ी बात करूं, मतलब कैप्टन का भी यहाँ पे रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको जो है, मतलब जब आपके पास 5 गेंदबाज हो तो क्यों ना पाँचों गेंदबाज के आप बराबरी से यूज़ करें। पहला सेशन होता है जिसमें कुलदीप यादव को एक भी ओवर नहीं दिया जाता, चलो सर जस्टिफाइड है। लेकिन कुलदीप यादव मतलब जिस दर्जे का गेंदबाज है, आप 27 ओवर कराते हैं जडेजा से, 27 22 ओवर अश्विन से कराते हैं। क्या कुलदीप यादव से सिर्फ 10 ओवर जस्टिफाइड है? क्या पूरे दिन में आप सिर्फ 10 ओवर दे सकते थे कुलदीप यादव को? क्यों नहीं दिया आपने एक्स्ट्रा ओवर्स कुलदीप यादव को? मेरे हिसाब से 15-16 ओवर्स कराने चाहिए थे। शायद आज इंग्लैंड की टीम ऑल आउट होती। जो रूट ने सेंसिबल इनिंग्स खेली वो ठीक है, बट यहाँ कैप्टेंसी का भी सवाल आता है। आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज पड़ा हुआ है कुलदीप यादव, विकेट्स नहीं आ रही थी जडेजा से, नहीं आ रही थी अश्विन से, कुलदीप यादव से ओवर कराते।
कृष्णा क्या ये जस्टिफाइड है? 10 ओवर कराया सिर्फ कुलदीप यादव से पूरे दिन में। जी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप देखो तो आकाशदीप को दिया था, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी स्टार्टिंग सेशन में। उसके बाद फिर आकाशदीप को विकेट नहीं मिल रहे थे, गिलक्रिस्ट सेटल था, फोक्स भी अच्छे से खेल रहे थे उनको, लेकिन कुलदीप को दे सकते थे। अश्विन और जडेजा इतने कुछ बॉल से इतने लगे तो नहीं डेंजरस। अश्विन को तो कुछ मतलब अश्विन का ये सीरीज इतना खराब जा रहा है, बस उन्होंने 500 विकेट ली, बस वही एक अच्छी चीज की उन्होंने, लेकिन उनका विकेट्स नहीं मिल रहे उनको इतना मतलब कंसिस्टेंटली। जडेजा और अश्विन को अगर मैं मिक्स करूं तो दोनों 13-14 विकेट, मतलब 12-13 विकेट पे दोनों खड़े हैं। लेकिन एज अ कैप्टन मुझे लगता है शायद रोहित शर्मा अगर कुलदीप यादव को थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल करते तो शायद आज इंडिया ऑल आउट कर देती, इंडिया की बैटिंग आ जाती। मेरे को ऐसा लेकिन आज लगता है। देखो तो 10 ओवर जो कुलदीप ने भी डाली, वो इंग्लैंड खेल रहे थे उनको, स्पेशली बिल्कुल। आप देखो तो उनके जो बैटर्स है वो अच्छे से खेल रहे थे वो, इतना ज्यादा कुछ टेंशन नहीं लगे, क्योंकि आप देखो तो मैं कुणाल भाई, क्योंकि जो पहला दिन होता है ना, पहला 2 दिन वो बैटिंग के लिए अच्छा होता है, और इसमें ज्यादा टर्न वन कुछ दिखा नहीं, पेसर को ज्यादा अच्छी मदद मिल रही थी, और बुमराह रहता तो सबसे और ही बड़ी बेहतर चीज़ होता। कृष्णा, देखो कृष्णा ठीक है बुमराह नहीं है, इट्स ओके, बट जब आपकी पिच स्लो हो रही थी, स्लो पिच पे अगर अश्विन जडेजा को विकेट्स मिल रहे थे, ठीक है जडेजा और अश्विन से आपने इतने ओवर्स कराए, आप नहीं कराते क्योंकि पूरा सेशन आपको विकेट नहीं मिला है। सेम शेम ऑन टीम इंडिया, मतलब पहले सेशन में आप 5 आउट कर देते हैं, दूसरे सेशन में पूरा खेल गए रूट और बेन फॉक्स, आप सोचो दोनों कितनी कितनी गेंदें खेल चुके हैं, 226 गेंद खेली है रूट ने पूरे दिन में और 126 बॉल फोक्स ने। आपके पास इतने मौके आए, आपने कुलदीप यादव का यूटिलाइजेशन नहीं किया सही तरीके से। मैं क्रिटिसाइज रोहित शर्मा की वो नहीं कर रहा पर्सनली, लेकिन कभी कभी कप्तान का भी एक होता है कि हमें थोड़ा सा अलग चलना पड़ता है, थोड़ा सी चीजें देखनी पड़ती है। आप सारे बॉलर्स को इक्वली यूटिलाइज करते तो मुझे लगता है शायद कुलदीप यादव वो विकेट्स भी चटकाते ना। ऑली रॉबिन्सन 60 गेंदों में 31 रन, कृष्णा कहाँ तक फेयर है हमारे? हम टैलेंडर को आउट क्यों नहीं कर पाते हैं जब भी हमें जरूरत पड़ती है? टैलेंडर इतने रन क्यों बना के जाती है? इंडिया के साथ तो ये बस चीज टॉम हटली जल्दी आउट हो गए, वो सिराज के कृपा ने उन्होंने अच्छी बॉल डाली, वरना ऑली रॉबिन्सन तो आज ऐसे लग रहे थे टिक के आए हैं, मतलब इंडिया में वो इतने अच्छा बैटिंग नहीं करते। आज मैं भी चौंक गया कि रॉबिन्सन अच्छा बैटिंग करे। आप सोचो ऑली उन्होंने रॉबिन्सन 4 साल बाद खेल रहे हैं, 4 साल बाद कोई बंदा क्रिकेट खेल रहा है और वो इतना बढ़िया बैटिंग कर रहा है, बताओ। जी बिल्कुल, और रॉबिन्सन का हाईएस्ट स्कोर 42 है, तो वो कर सकते हैं थोड़ा बहुत बैटिंग। हमने इंग्लैंड में भी देखा, थोड़ा 25-30 रन बना सकते हैं, तो लेकिन इंडिया में इतना अच्छा खेल रहे हैं। बिल्कुल और इंडिया बिल्कुल। के नसीब भी खराब है कि इंडिया रिव्यू खो दिया, वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर एम्पायर ही आउट देगा तो आउट हो सकता है प्लेयर, अगर अंपायर ने नॉट आउट दिया तो इंडिया के पास रिव्यू भी नहीं है उसको चैलेंज करने का, अभिषेक शर्मा ने खैर सारे देखिए, रिव्यू खो दिए। रिव्यू के लिए मैं इतना कहूंगा नहीं क्योंकि हमारे कुछ रिव्यूज बहुत अच्छे थे। आउटस्टैंडिंग रिव्यू लिया था पॉप के अगेंस्ट, जो कि आकाशदीप का बहुत शानदार डेब्यू था। लेकिन कृष्णा जो रूट के बारे में बात करना बहुत जरूरी है, मैं वीडियो में बहुत बार हमारी डिस्कशन हुई है कि यार जो रूट को अपना सेंसिबल क्रिकेट खेलना चाहिए, स्ट्रेट बैट खेलिए, क्यों रिवर्स स्वीप के चक्कर में हो, क्यों बेसबॉल के चक्कर में हो। फाइनली जो रूट को एक अकल आई है कि मैं इस तरह का गेम खेलूं तो मैं ज्यादा सक्सेसफुल हूं। और ये देखिए आज जो रूट की सेंचुरी की वजह से आज इंग्लैंड की होप्स इतने हैं कि हो सकता है कल अगर ये पूरा पहला सेशन खेल गए तो साढ़े तीन मुझे नहीं सौ लगता तीन सौ पहला सेशन, सत्तर क्योंकि अगर तुम रॉबिन्सन को विकेट निकाल दो तो फिर बाद बशीर और एंडरसन ही है, तो वो तो विकेट हो सकता है खत्म, तो बस रॉबिन्सन का विकेट अगर मिल जाए इंडिया को तो ऑल आउट हो सकती है, कृष्णा, नहीं तो। एक्चुअली मैं ये तो हम लास्ट सेशन में भी सोच रहे थे, हम यहाँ से विकेट निकालेंगे फटाफट से सब आउट हो जाएंगे क्योंकि 3 विकेट तो आ सकती थी मैटर ऑफ 1 आवर, हाफ एन आवर का जो गेम बचा था। लेकिन आई नहीं है एक्चुअली, मतलब ये रियलिटी है, आपको माननी पड़ेगी कि थोड़ी लेकिन सी अगर रूट फ्लैट। सेंसिबिलिटी है ना, अगर इंग्लैंड की तरफ से देखे जाए, अगर रूट के पास सेंसिबिलिटी है तो वो क्या करना चाहिए पता है, वो लास्ट का जो ओवर रहता है ना, अगर वो लास्ट के ओवर में स्ट्राइक के अपने आप को नेक्स्ट ओवर में खेलना चाहिए, मतलब वो रॉबिन्सन को स्ट्राइक ही नहीं देना चाहिए, वो रूट ही सब ओवर खेल जाना चाहिए। तो अगर इंग्लैंड के सेंसिप में देखे तो अगर इंग्लैंड को अच्छा स्कोर और थोड़ा स्कोर करना है तो रूट को ही सब ओवर खेलना पड़ेगा, मतलब
स्पेशली स्टार्टिंग के जो ओवर्स है वो। बिल्कुल, बिल्कुल। और रूट की यार तारीफ़ करनी पड़ेगी क्योंकि रूट ने जिस तरह से जितना पेशेंस दिखाया, रूट एक इंग्लिश बैट्समैन लगता ही नहीं है कि यार इंग्लिश बैट्समैन है, ऐसा लगता है कोई सबकॉन्टिनेंट का प्लेयर हो बांग्लादेश, श्रीलंका जो एशियन कंडीशंस में ज़्यादा खेलता हो। कितनी ज़बरदस्त बैटिंग देख के मज़ा आया कृष्णा, कितना ज़बरदस्त बैटिंग किया जो रूट ने। सेंसिबल क्रिकेट। जी बिल्कुल, और रूट ने कोई रिस्की शॉट्स भी नहीं मारे। आप अगर आप देखो तो उनके शॉट्स भी रिस्की नहीं थे, रिवर्स स्कूप भी नहीं थे। उन्होंने अच्छे बिल्कुल। और शॉट्स लगाए। जिस तरह से कवर ड्राइव मार सकते थे, कवर ड्राइव मारा, जब जहाँ रन्स की ज़रूरत थी, वहाँ रन्स बनाए। और इंग्लैंड अब इस कगार पे खड़ी है, अब आप ये देखो स्कोर कंपैरिज़न 119 पे 5 थे, अभी 302 पे 7 है। तो टाइम टाइम की बात है, अब थोड़ा टाइम स्पेंड करो टेस्ट मैच में तो मैच बदल जाता है एक सेशन में। तो इंग्लैंड ने 2 सेशन में गेम को पलटा है मैं कहूँगा। और इंडियन टीम को इससे से जल्द आउट करना चाहिए, लाइटली नहीं लेनी चाहिए। मेरे को लगता है शायद हम लास्ट सेशन में थोड़ा लाइटली ले गए, इस वजह से रन्स थोड़े ज़्यादा हो गए। 300 रन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। कृष्णा आप 300 एक्सपेक्ट कर रहे थे, जी जिस तरह की बिल्कुल नहीं। सिचुएशन थी? नहीं, मैं सोच रहा था कि इंग्लैंड 200 भी नहीं बना, जिस तरीके से पोजीशन पे थे। और मैंने ये भी नहीं सोची थी कि बेन स्टोक्स पूरा सेशन खेल जाएगा, बिल्कुल, बिकॉज बिल्कुल। और बहुत खराब सीरीज बहुत खराब गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए तो अब हम बात करते हैं दूसरा गेम जो कि टी20 का गेम था न्यूज़ीलैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में। कृष्णा बहुत ही जबरदस्त मैच हुआ, मतलब आप कह सकते हैं बॉलर डे था, बॉलिंग डोमिनेशन हुआ पूरी तरीके से। न्यूजीलैंड की टीम ने एक्सपेरिमेंट के चक्कर में मैच गंवा दिया, ये मैच जीत सकती थी, न्यूजीलैंड के पास अच्छा खासा मौका था। ऑस्ट्रेलिया की एक्सपेरिमेंट बात नहीं है करें तो भाई, एक्सपेरिमेंट नहीं है काल भाई। उनके एक्चुअली क्या हो गया, कॉनवे और रचिन को इंजरी हो गई। कॉनवे भी बैटिंग पर नहीं आए, इंजर्ड हो गए। रचिन को भी नी में कुछ दिक्कत हो गई, वो भी बैटिंग करने नहीं आए। इसके लिए उनका पूरा मोरल का बैटिंग ऑर्डर ही खराब हो गया। इसके लिए चेज नहीं कर पाए। ओके, अगर कॉनवे और रचिन ठीक है, खेलते ठीक थे तो न्यूजीलैंड चेज कर लेती थी। है। ओके, ओके। ओके, जो राहुल आ गए इनसे थोड़े मैं बात कर लेता हूँ, That was इंडिया वर्सेस unfortunate, Kunal. इंग्लैंड। By actually, New Zealand, actually, Kunal, by New Zealand were after Head and Smith show, New Zealand after that Lockie and Ben Sears took wickets of Maxwell and they restricted Australia below 200. I thought that Australia will make 240 after what Head gave the start, but comeback by New Zealand bowlers. But Bolt was expensive still, but miss was Conway and Rachin. Both CSK players got injured, and Conway is also injured. That's also bad news. Yeah, yeah, okay, okay. Okay, okay. So some comments taking from Rahul also. Rahul talking about Joe Root today. Joe Root domination finally means Rahul first session 112 for 5 and second session is wicketless and at the end England is still in a match, not allowed Yeah, 302 for absolute. 7. Yeah, England really recovered well. I mean, a great knock from Joe Root. Finally, match on the line, series on the line, and Joe Root stepped up with a century, 106 not out, and has taken England above 300. Now, it looks. I have to say that India had the series in the grasp of their hands at 112 for 5 at lunch. But frankly speaking, I think we have lost a chance to close out the series in the last two sessions. Yes, Joe Root played a good knock, but we have missed a chance to close out the series. To be frank, we have given England some hope. Now England is 302 for 7. We have to, if we want to still win this match, we have to get these last three wickets very quickly, bowl them out below 350, because once England crosses 350, the victory will further slip away from India's hands. And I don't, and the nature of this series is such that we don't consider draws. To be frank, there's either England winning or India winning. I don't think draw is But going to Rahul, happen don't with you the way think these there two is a teams play. captaincy issue? Rahul, don't you think this is a captaincy issue? Means you It are is. giving only 10 overs to Kuldeep Yadav, 27, 26 overs. Means, yeah, Ravin Jadeja and Ashwin looking flat at some time. Why not you are using Kuldeep Yadav continuously?
That is also, I think, To be because it is not frank, justified. 10 yeah, overs to Kuldeep only. absolutely. Yeah, Kuldeep Yadav, even Mohammad Siraj and Akashdeep. Okay, Akashdeep, to his credit, got 3 wickets, but even uh, Mohammad Siraj and Akashdeep, they bowled more overs than Kuldeep Yadav. And you know that, I think I said this yesterday, that this wicket is looking like it'll take turn on day one itself. Yeah, so you It's should have not definitely taking turn, given. but it is slowed down. Slowed down. Actually, it It is is slowed down. Okay. definitely very slow. You should have given more overs to Kuldeep Yadav. Ashwin, all series, I have to say, he's looked off color. Yeah, he reached that 500 wicket milestone, but seriously, nothing special in this series from him. He has looked ordinary the whole series. Ravichandran Ashwin, I'm sorry to say, he's one of the greatest bowlers right now for India, but in this series, he is looking off color. I think maybe Kuldeep Yadav should have bowled more than Ashwin. Ashwin is not at all doing well, to be frank. So there is definitely a captaincy issue, and where is the going for the kill really when you have 112 for 5 at lunch. England should have been bowled out by tea, or shortly after tea at latest. India should have been coming to bat on day one of this match, but we have let England get away really. And tomorrow we need the last 3 wickets quickly. I think um, Akashdeep and Mohammad Siraj, they're right now looking like the best bowlers. They should really try to get these last 3 wickets quickly between them, and wrap up England under 350. Don't let them get above 350, because then it gets much harder to win once England scores 350. If we bowl them out for 350 tomorrow, we can still try to win the match. But if Okay, they Rahul. go above 350, it's going to be tough. Okay, Rahul, prediction time. How much you are thinking that England will realistically they will make? How much? uh, Realistically speaking, the problem is, Joe Root is still at the crease. That's a problem, and I think because of Joe Root still being at the crease, England will score. I don't think they will get to 400, no, but I think they will score 360. They will get all out for 360, 360, and then India will come to bat, and I think India will probably make a similar score to what England made, but I'm going to say India will be 250 for 5 at stumps. Let's put it that Five? way. Five? Yeah, Oh my yeah, God, I big think, prediction. Okay. yeah, Krishna, India your prediction. 250 for 5. Okay, Krishna, your prediction As tomorrow. Rahul Bhai said, England can go to 350 or 360. That's my prediction. Same. But For you same, also. same, yeah. Because if you get Robinson out early, then Bashir and Anderson will come, so that will be a quick wickets. But if Root is still standing, so he can make the England to 350 or three, as Rahul said, 360. And if India comes to bat, then if England get Jaiswal early, then it will be big problem for down deep batsmen, because Jaiswal is high scorer runs for India. If England gets Jaiswal ASAP, so it will be problem for India. Then Rohit has to step up. That's the case. So I feel it will be 250 for 5, as Rahul Bhai said. Same. Okay, guys. Now let's come to New Zealand versus Thing Australia. is, That depends on Jaiswal's Joe fitness, Root. Kunal. If Robinson gets out, Joe Root will farm the strike. He will not give strike too much to Bashir and James Anderson. If we can get Joe Root out very quickly, then we can bowl England out under 350. It's possible, Yeah, but without getting Root out, England is going above 350. Anyway, yeah. So let's come to Australia versus New Zealand. Yes. yeah. So very good bowling from New Zealand, but Talenders again makes a run. Pat Cummins batted really Yeah, well. Pat Cummins, 28 of 22, he batted really well. We were saying he's not much of an all rounder, but actually he is. He's capable of swinging the bat around for a few runs. So Cummins did very well yesterday to get Australia to 174, because without that, it was looking like Australia would get bowled out for 150 or 160. Those few runs in the end, they make a difference to the score. So Pat Cummins really stood up and made that difference. Unfortunately, what to say, Australia had a flying start. Travis Head scoring 45 off 22. Even Mitchell Marsh got off to a start, 26 off 21. But
Once head got out, Australia just collapsed. I think from 85 for 1 in 85 for 2 in 6.4 overs, they got all out for 174 for 10. Credit to the New Zealand bowlers for that, especially Lockie Ferguson, Ben Sears, and Mitchell Santner. Even Adam Milne, you could say he got those 2 wickets, but he was a bit expensive. Trent Bolt off day, to be frank. So all the other bowlers have done really well. Ferguson, Sears, and Santner, they really bowled very well in those middle overs too. But Rahul, do you think Smith should be considered for T20 as of I now? think I don't think. Steve Smith shouldn't be in the T20 World Cup. Even last T20 World Cup, he was not really in the playing 11. If you saw that, to be frank. But look, Steve Smith cannot play the T20 World Cup. I don't think so. I think he should just stick to ODI cricket and Test match cricket. Maybe even at ODI cricket, a time will come when he is done. Maybe last next year Champions Trophy should be his last uh, ODI tournament, and then focus on Test match cricket, because you can see that him trying to play all three formats now, it's kind of messing with him in Test match cricket. He's not getting runs in Test match cricket, to be very honest. So he should have stayed out of T20. Anyway, David Warner is clearly better than Steve Smith in T20. I don't know why Warner is taking rest. To be frank, Actually, means I think Rahul, one and only thing they are just trying Steve Smith that in opening how Steve Smith can do, but I don't think Steve Smith should be in a playing 11 as of now. It's really not needed, to be frank, because Head and Warner is an established opening pair for you right now. You don't need anything else. Yeah, okay. Okay, Krishna, your views on Steve Smith, do you think that he should be considered in upcoming T20 World Cup? Son, Steve Smith are especially test type of a batsmen in T20 cricket. So Steve Smith doesn't suit in T20 cricket. But today he started off well. Means he hit fours and sixes. He was looking good, but the delivery from Lockie Ferguson was on the target, and his it got LBW to Steve Smith. So it was good delivery from Lockie Ferguson. So Root had Steve Smith had a good start, but it didn't capitalize. So yeah, as Rahul Bhai said, Henry and Warner will be ideal choice for Australia in the T20 World Cup because it is an explosive batsman and Warner is looking great. So Yeah, of course. Okay. Okay, so that's it from New Zealand versus Australia. Now let's come to WPL, another thrilling match. And before that, Rahul, you get the opportunity to see the opening ceremony. No, I didn't get to see the match. Unfortunately, I had other work this morning, so I couldn't. I think Krishna also watched that. You enjoyed it, Yeah, Krishna? Opening ceremony? I do have one comment on it though. Why BCCI, they have money to do an opening ceremony for women's IPL, but not money to do an opening ceremony for the ODI World Cup? I don't understand what. For ODI World Cup there was no opening ceremony, but for women's IPL there was an opening ceremony. Absolutely shameless from BCCI, to be honest. You're basically saying that women's IPL is more important to you than World Cup. And let's not forget, during the World Cup, there was ceremony before India versus Pakistan. Other teams don't deserve a That ceremony. was only for audience also. That was not broadcasting, just for audience. Yeah. So no, thing is, you have a ceremony for one match in a World Cup, not the whole World Cup. You're having a opening ceremony for franchise tournament, which is played every year, but there's no opening ceremony for World Cup. Is absolutely shocking from BCCI. But anyway, that apart from that, okay, fine. Opening ceremony, all fine, fine and good. Hopefully, but the match really lived up to its hype. Good start to the tournament. Must say, great finish from Mumbai Indians. Last ball sixer, mm, uh, And to finish the actually, match. both I team mean, played really well. Both team played really well. I know Delhi Capitals not started really well. Means what we're expecting in power play means you are not playing with 100 strike rate. That is also one of the problem
First, Shefali Verma means worst runs in his career. I think so. This is first time where I see Shefali Verma 8 balls, 1 run. First time I have seen him like playing like Yeah, this. very poor start from Shafali Varma. You don't expect that from her. Hopefully, it's a one-off match. She will rebound in the next match. But Alice Capsey, wow, excellent batting. 53 balls, 75 runs, as well as wickets also. He also taken wickets in death over. But unfortunately, that was great six. But Rahul, at the end, you have to say that this was a match where audience will definitely love to see. Good Yes, comeback from both sides. absolutely. Yes, absolutely. This is definitely the kind of match that will attract fans to the WPL, and make it as big as the IPL one day. So hopefully we will see that. Maybe one day we will see the WPL and the IPL being played alongside each other. That will be really nice to see. Okay, Rahul, yesterday we are talking about Delhi Capitals playing 11 means either Ellis Capsey will play, either Jess Jonassen will play. Funny, Ellis Capsey has said that now his place is confirmed. He's 2 wickets, 75 runs. So what you need from a one player when you are delivering Mm, from both side? yeah, absolutely. Great performance with both bat and ball. Alice Capsey, 75 of 53, and she was really looking in great form. Her and Jemima Rodriguez, surprisingly, we don't regard Jemima Rodriguez as a high strike rate player, but she scored 42 of 24 yesterday. She also did well. Then Marizan She Cap. is classical player. Actually, she is classical Yes, player, but yes. great. Marizan Cap also did a fairly good job. 16 of 9. From 9 balls she faced, she scored 3 boundaries. So that she also did a very good And job. first over Sometimes wicket also. First over wicket maiden. absolutely. And so in T20 cricket, to be frank, even if you score knocks like 16 of 9, it's considered a decent innings. It's not a bad innings. Yeah, yeah. Overall means a very good match to see, and unfortunate for Delhi Capitals that giving spinner a last over is also crime. Rahul means if I talk about captaincy, means why spinner is bowling a last over when there is when you are bowling in a Bangalore. That is a big And society. a suicidal move. You can't have a Yeah, spinner you bowling your got two last wickets. over I know at you got Chinnaswamy two wickets Stadium. because of pressure. You got two Yes, wickets because of pressure of 12 runs in 6 balls. But this will not happen every time that your spinner will gives you a wicket in last over. I think it's better if if you go if those wickets didn't fast fall, bowler Mumbai Indians would have won it a long early, time two back. three balls. Yeah, They would have Harmanpreet won Kaur it will with two or finish three it. balls left. Yeah, but I think what they have to do, at least Marizan Cap should be there for last over, or maybe Shikha Pandey. Any one of the fast bowlers should be there. So, because as a fan of Delhi Capitals, I also thought that we have just win it. And when I see the second last ball, Harmanpreet Kaur was out. I thought, who will hit six then? But Sajjana, the new debutant, Yeah, means you Sajjana. in every league there is new players are coming and impressing. Yeah, I guess Shanawaz Dahani did not take much inspiration from Sajna. If you actually, Multan Sultans in another match, in the PSL match, they needed six to win from the last ball against Peshawar Zalmi, but they could not do it. And Naveen ul Haq, last 2 wickets, he got 2 wickets in that match. So anyway, yeah, coming back to WPL, I guess it's bigger than PSL. Yeah, so great finish by Sajna. Yeah, yeah. No one expected, but yeah, at the end, very good match, and we want this type of game should be there each and every day. So now, Rahul, let's come to the tomorrow game where home team Royal Challengers Bangalore will going to play Yeah, with UP Warriors. So Rahul, can things will change for Royal Challengers Bangalore? Big definitely. question. And definitely, they're playing in Bangalore now, home ground. I think they have a good chance to, turn things around. Unfortunately, in men's cricket, RCB does not have a great record in Chinnaswamy Stadium, but uh, the women's team has a chance to set that record straight.
and make use of home advantage. They will have the home crowd on their side. So hopefully they can do something tomorrow against UP Warriors, and they can come out on top, get off to a winning start in their campaign. Smriti Mandana and co. I certainly hope so. I mean, I'm generally a Chennai Super Kings fan, but there's no CSK in women's in WPL, unfortunately. So I support RCB because they of the one and only Smriti Mandana. So Krishnan Iris says it is very sad to lose for Delhi Capital. Thought they defended it. Yeah, really sad, but good match. Means I don't think there is any loss of net run rate in this match for both the teams. No gain, no loss because 20 overs completely bowled. Yeah, no gain, no loss. Not much to be gained. Maybe what 0.10. That would be the, yeah, nothing. Minimal, that will be, It's yeah. nothing. Okay, now let's come to Royal Challengers Bangalore. Rahul means they have done so many changes in auction. They release Megan Shutt, but bringing Cat Cross means another good option, good fast bowler. Renuga Singh Thakur is there. One more problem is that one good spinner is not out of the tournament. That is a big setback for Royal Challengers Bangalore. That bowling is also the problem. All the time they have problem, but they have solution also. If I talk about some player like Ellis Perry can give you some bowling. Shoppy Divine can give you bowling if needed. So if Shreyanka I see the Patil. probable, yeah, Shrenka Patil is there. Asha Shobna, Shriyanka Patil, Bahadur. Simran Bahadur has to bat in the middle order. Georgia Graham, another interesting player, wins who all impressed in T20 this year for Australia. So let's Yes, see how absolutely. I Georgia remember her, I Graham. remember Georgia Wareham very well because I think she's the one who really derailed India in the semi-final last year in T20 World Cup. She's the one who really caused harm for India and knocked India out of the tournament. Yeah, yeah, of course. So these are some good options. And Smriti Mandana, again, very dependable batsman for RCB means you have to step up with a bat, otherwise RCB will be in a big trouble. Smriti Mandhana has Yes, to step up. absolutely. Yes, absolutely. Smriti Mandana has to step up. She's the captain of the team, so no one better than her to really set an example. Yeah, and extra player if I talk about Nandan D. Clark, another all-rounder. But if you want to settle down Soppy Divine and Ellis Perry, I don't think you need Nandan D. Clark. Nandan D. Clark may be backup as an all-rounder, and third overseas Cat Cross, fourth I guess Georgia Vareham. So these are four overseas most probably for you. But in front of you there is UP Warriors, Rahul again. Elisa Haley. You can't put Elisa Haley out of the match anytime. He's a good opener. No, absolutely not. You can never rule out Alyssa Elisa Healy. Haley, She's one of the most, Talia Megrath. yeah, she's one of the most dangerous openers in white ball cricket. And you have among the batsmen, you also have Daniel Viat as well Yeah, from Daniel Watt England. is there. So let's see how Daniel Watt will play in this. But as of now, I have seen that I think Daniel Watt has not reached India so far because in squad there is no name of Daniel Watt. So most I probably see her name Shweta in the squad Sherawat. in Crickbuzz. I see her name in Crickbuzz in the squad. Yeah, in the squad is there, but I think tomorrow most probably he is not available. So Shweta Sherawat probably he will play like previous year. He will be opener, third number Kiran Navgire, then Vrinda Dinesh, Talia Megra, Grace Harris. Yesterday we talked about Grace Harris also. And Grace Harris a good player. Deepti Sharma again dependable bowling option means Deepti Sharma performance also affect UP Warriors in previous season. Deepti Sharma was not in a prime, actually. Yeah, Diti Sharma wasn't really in a form, but she has a chance to come to form this time, and she's an all rounder. She can play a very crucial role with both the bat But and the Rahul, ball. now let's come to another player that is Sophie Eccleston, one of the best player of UP Yeah, Warriors, yeah, definitely one of the greatest cricketers right now, Sophie Ecclestone. and Anjali Shirvani, Rajeshwari Gaikwad. So
If I talk about UP Warriors, mainly depend on Elisa Haley and Eccleston and Talia Megra. Three-player dependency, most probably in this team. If you want to do something for RCB, I think good match. It will be a very good match, RCB Absolutely. versus. And today, when I see the fight between this score with a 160, 170, if you fight with the last ball, so I think in this WIPL maximum max to max score will goes to 185 or 190, 180 to Yeah, 190, absolutely. We can not more expect than that. 185. Probably in women's cricket, you won't get 200 scores too often. You will get scores more like 180 and 190. I agree with that. And Rahul, I think pitch will also change. Means every day you are playing in the same ground, so things will also change. Pitch will slow down gradually, match by match. Not on the second next day, but yeah, match by match it will gradually decrease. No double header also, so all the game is during that condition where there is so much dew in the second half. So again, win the toss, choose to ball. I think so. And in fact, in any event at Chinnaswamy Stadium with the short boundaries and given it's always batting friendly conditions, you want to be chasing runs. You don't want to be batting first because then you'll never know how much is enough. And if you don't score enough, then you're in danger of losing. Yeah, of course. So anyhow, anyways, a good match for Mumbai Indians. But again, Harmanpreet Kaur, wow, what a innings for Mumbai Indians, 34 balls, 55. But Rahul, question is, when it comes to Team India, where is the form for Harmanpreet Kaur in ODI, in T20s? When it comes to India, I have no idea what happens to international cricket. Hopefully, she will find her form again when it comes to playing for India. And if and she of has a very course, good we have WPL T20 this World Cup season, also yes, later if we this have year. WPL, if she has a very good WPL, then she can really be a uh, what to say, more than a contender for the Indian team. She will have confidence when she comes back to playing T20 internationals. So this IPL is pretty important for her. Yeah, hope for a good game and. Let's see how India will come back tomorrow and hope for another good game, another thrilling game between UP Warriors versus Royal Challengers Bangalore. So, guys, till then, thank you very much. Thank you for your question. Thank you. Thank you, Rahul. Thank you, Krishna Nair. See you tomorrow, guys. Hope for a good game and India will do something, some miracle on the Absolutely. day two. Yeah. Till then, guys, subscribe KFCS and Thank you. Sportsbid. Bye bye. Good night.